Hello students, in this video we are going to discuss about the eastern coastline. So the eastern coastline actually starts from Ganga Delta in West Bengal to Kanyakumari in the south. You all know very well कि ईस्टर्न साइड पे हमारा वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल से लेकर बिल्कुल नीचे साउथ में लास्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी है वहाँ तक पूरे में ईस्टर्न कोस्टलाइन स्ट्रेच्ड है. द कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट बंगाल. अब क्योंकि हम ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, सो यू नो वेरी वेल कि ईस्टर्न पार्ट में वी हैव बे ऑफ बंगाल एज वेल एज वी हैव ईस्टर्न घाट्स विच वी हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस चैप्टर. तो इन दोनों के बीच में आपकी कोस्टल प्लेन्स आती हैं. Coastline here is much wider than the western coast. This is a big difference कि ईस्टर्न कोस्ट जो वेस्टर्न कोस्ट था वो नैरो था, वो बहुत पतला है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट इज कंपैरेटिवली वाइडर. The major southern rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri all form deltas along the eastern coastline. So these are the names of all the important rivers which are in eastern coastline. The land has become fertile due to the mineral rich soil. Obviously वहाँ इतनी सारी rivers हैं तो वहाँ की जो soil है वो बहुत rich होती है minerals में, और इसीलिए वो बहुत उपजाऊ, बहुत ज़्यादा fertile होती है. And because of this reason that place is also known as the rice bowl of India. As the eastern coast is very broad and smooth, it does not create conditions for नेचुरल हार्बर्स. बहुत ब्रॉड और स्मूथ होने की वजह से वहाँ पे शिप्स को खड़ा नहीं किया जा सकता, वहाँ कोई हार्बर नहीं है. ये सारे डिफरेंस आ जाते हैं आपके वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में. Two important ports have been developed here, Chennai and विशाखापट्टनम. तो वॉट एवर पोर्ट्स आई हैव टोल्ड यू उनमें से चेन्नई और विशाखापट्टनम जो है वो आपके ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे आते हैं. This part of the coast is divided again into two parts. That is, the northern part is called Northern Circle and the southern part is called the Coromandel Coast. The eastern and western coastal plains meet at the southernmost point of India, that is कन्याकुमारी. आपको पता है कन्याकुमारी एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का. वहाँ पे जाके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टलाइन मीट करते हैं. ओके जैसे आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जाके नीलगिरी हिल्स में मीट करते थे, ऐसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो कन्याकुमारी में जाके मीट करते हैं. द इंडियन ओशन washes the shore of Kanyakumari. This is also the place where the three water bodies around India meet. Very important. कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी तीनों वाटर बॉडीज कौन कौन सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, तीनों जाके मिलती हैं. तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है कन्याकुमारी, क्योंकि ये बिल्कुल साउथ में बिल्कुल टिप पे आ जाती है, एंड पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. Now come to islands. Now what are islands? Islands are the small pieces of land surrounded by water on all sides. जैसे पेनिनसुला थ्री साइड से सराउंडेड होता है, आइलैंड्स चारों तरफ से घिरे होते हैं पानी से. यू कैन सी द फिगर. There are two groups of islands on both sides of the Indian peninsula. The group of Lakshadweep Island, which is situated in the Arabian Sea, to the west of Kerala. और ये जो है दिस द स्मॉलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंप्राइजिंग ऑफ 36 आइलैंड्स. तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है उसमें छोटे छोटे कई सारे 36 आइलैंड्स हैं. एंड द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कवराती. These islands are well known for their coral deposits. Most of these islands are flat and has even surface and only 10 islands are inhabited. It means कि out of 36 सिर्फ 10 islands पे ह्यूमंस रहते हैं, कोई ना कोई. अदरवाइज बाकी की जो 20 आइलैंड्स हैं और यू कैन से 16 आइलैंड्स है, दे आर आइसोलेटेड, नो वन लिव्स देयर. The larger group of islands is Andaman and Nicobar Islands, which are situated in the Bay of Bengal. Now the other group of island is Andaman and Nicobar Island. These are a group of about 572 islands and their capital is Port Blair. These islands are hilly and covered with forests. And here also only 38 islands are inhabited, mostly by tribal groups. So here also out of 572, only 38 islands are inhabited by tribals,
tribals. ठीक है, and rest of the islands are isolated. Then come to the climate of the place. The coastal plains have a moderate and pleasant climate. The places which are near the coast, the coastal areas are having moderate climate, not too cold and not too hot. Temperature difference of summer and winter is not as much as we find in North India. The days are hot during summer. However, the cool breeze blows at night and making it pleasant. In winter too, the days are warm and the nights are slightly cooler. Western coast gets very heavy rainfall in summer, but the Coromandel coast gets rain in winter too. तो वहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी अच्छी रेनफॉल होती है समर सीजन में. And Coromandel coast is a place where they get rainfall in winter also. The climate on the islands of Lakshadweep and Andaman and Nicobar is warm and humid. So they have humid climate. The breeze, however, keeps the climate moderate like that of coastal plains. लेकिन जब ठंडी हवा वहाँ चलती हैं तो वो climate को थोड़ा सा pleasant कर देती हैं. And one more important feature about these Andaman and Nicobar Island is that they have more than 100 wildlife protected areas, so that it attracts thousands of tourists every year. And I'm sure most of you have already gone there. Occupation. The coastal plains are known for a variety of spices grown here. So these places are rich in spices. They are full. The many type of spices are grown here. So these spices are exported to many countries from here, and the ports and harbors located along the coastal plains are used as major trading centers. So definitely, people trade, do business because of these natural harbors. Shipbuilding and ship repairing are also done in some places, and the lovely beaches also help to develop the tourism industry. All of these activities provide work for the people living in this area, and one more important occupation is fishing. Okay, so all these are the major occupation in this particular area. So this is all about your chapter, coastal plains. Please read it again. Do self reading, that is very important. Thank you.